you have a planet in Jyeshtha and your Jyeshtha is getting activated. That is why you start praying to Devi or Mata. Then Indra like ना notice कि closely तो बोल रहे हैं कि वो एक बार बोलते हैं कि ओम इंद्राय नमः स्वाहा, तो फिर दोबारा बोलते हैं ओम असुराय नमः स्वाहा. Any skin issues that arises is because of Virgo. ठीक है, Virgo is the main element in it. So let's talk about Indra, the deity. ठीक है, सो चित्रा का एंगल. सो चित्रा रिप्रेजेंट्स अप्सराएं. ठीक है, अप्सराएं हैं, बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लाइक ना, क्योंकि एक प्रकार से वीनस का डेबिलिटेटेड पॉइंट है, एंड दैट इज बिकमिंग दैट कॉल बिकमिंग लाइक अ बिकमिंग राहु एलिमेंट इन इट. उसमें कहीं ना कहीं वीनस डेबिलिटेटेड प्लस वहां पे फोकस जा रहा है कि लोग वो वाला एंगल आपके उसमें आ रहा है. सो दैट इज लीडिंग टू some sort of things, some kind of desires. So there is a desire, whole lot of desire within the Indra side, and that is also fueled by Ashlesha side. Ashlesha is actually what is sensuality, sexuality, uske taraf mein hai, and that is getting fueled by this concept of Chitra in 11th. सो चित्रा में मैं तुमको पहले ही बताया था कि ऑल काइंड ऑफ स्कैंडलिज्म, लाइक ना सेक्सुअल अब्यूज और ये सारी चीजें होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, एंड दैट आल्सो गोज विथ ज्येष्ठा. सो नाउ देयर आर इनफेमस स्टोरीज अबाउट इंद्रा. सो पहली स्टोरी ये है कि जो गौतम ऋषि थे, ठीक है, सो इंद्रा लुक्स एट गौतम ऋषि's वाइफ अहिल्या, एंड शी इज वेरी ब्यूटिफुल, एंड इंद्रा इज समबडी लाइक ना कि क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, सो ही नोज कि नहीं, मैरिड का तो कोई चांस नहीं है, सो नो यूज ऑफ लाइक ना गोइंग दैट वे. सो ही यूजेस हिज टैक्टिस ऑफ लाइक ना, उन्होंने अपना रूप बदला एंड ही गोज टू अहिल्या एंड लुकिंग इन द फॉर्म ऑफ गौतम ऋषि एंड टेकिंग द फॉर्म ऑफ गौतम ऋषि, एंड देन ही गोज एंड स्लीप्स विद अहिल्या, एंड नॉट रियलाइजिंग अहिल्या लाइक ना कमिंग आउट ऑफ लाइक ना हर कुटिया, she notices like his husband outside. She like totally confused like how his husband is outside when he was inside, and that is the moment when like from inside Indra comes out, and Gautama Rishi's look both of them together, and he realizes that this is Indra who has taken the form of like him. और फिर then he gives him श्राप दे देते हैं उनको कि like कि तुम्हारा कोई भी मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारे दिमाग में क्या यही ऐसा इस प्रकार से काम वासना चलती रहती है, जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे शरीर पे आ जाए. तो इन दिस वे ही वाज लाइक ना सहस्त्र योनि, उनके 1000 योनिस उनके शरीर पे आ गई, एंड इन देन दिस दे कर्स अहिल्या आल्सो टू बिकम लाइक ना फॉर्म ऑफ अ मूर्ति, बुद्ध. शी वाज लाइक कि यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हु इज नॉट योर हस्बैंड. ठीक है, उनको ये इसलिए नहीं कर्ज किया कि यू स्लेप्ट विद हिम, ये लेकिन तुम्हें कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि लाइक ना दैट सेंसिटिविटी दैट you are with somebody, even if you understand if there are two twins, if you live with one of the person you know when the other comes. ऐसा तुम नहीं कह सकते अरे दोनों तो ट्विन थे मैं तो कंफ्यूज हो गई या कंफ्यूज हो गया. You cannot say that. You know, even if they are twins, there is a distinction between them. So that is why he cursed him कि तुम तो मतलब पत्थर के समान हो, तुम्हारी बुद्धि तो एकदम पत्थर के समान है, and that is why you will become like that. ठीक है, तो that is where Ahilya becomes like a rock, and then Gautam Rishi leaves, and then Ram ji comes, and वो ना पूरा एपिसोड है कि राम जी converts her back to like this thing. But here Indra like na getting that curse, he knows he cannot return to Indralok, वो स्वर्गलोक में वापस नहीं जा सकते. So that is why he decided to like na hide, go in a hiding and stay there like na till like na he is confused क्या बोले अभी उसको सहस्त्रयोनि, and then whole body is like na smelling like hell, and then there is like all period things going on from his body, so like now full mess, so he cannot go. So realizing this he like na starts praying to like na Devi, he starts praying to the Devi and request him for like na कि कुछ उनका वो करे. So then Devi blesses him after like na a lot of doing penance, then Devi blesses him, and all those yoni converts into ice.
ठीक है, and that is why he is then called as the thousand eye one. ठीक है, हजार नेत्रों वाले. So that is how Indra's transformation happens. So there is a from this story what we can get exactly is there will be skin issues. First of all, there will be skin issues related to ज्येष्ठा. तो ऐसे स्किन इश्यू जैसे चिकन पॉक्स होना, जिसे हम बोलते हैं माता आ गई, माता आ गई. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड प्रेइंग दिस होल कल्चर ऑफ देवी पूजा करनी शुरू कर दो. जैसे ही माता निकलती है हम लोग देवी पूजा, हम लोग उसको माता बोलते हैं क्योंकि वो माता की पूजा करने का टाइम आ गया कि लाइक ना यू आर लाइक you have a planet in Jyeshtha and your Jyeshtha is getting activated. That is why you start praying to Devi or Mata, and you like na place them like na in like leaves and all, like na neem ka patti और वो सब लगाओ ताकि this can be cured, right? So इसीलिए chicken pox बोलते थे, तभी माता बोलते थे उसको. That will be a disease that will be correlated. But in worst case scenario, it could also lead to a lot of other diseases जो कि पूरी बॉडी पे होता है, जैसे कि vitiligo. That will be also be there, and this is coming because of Chitra. Remember that this is coming because of Chitra. Chitra का कर्म कर रहे हो, मतलब basically anything you have related to do with Chitras, any planet that is there in Chitra, that is fueling this whole process. ठीक है, so that is why you will be seeing this rogue happening, and it is curable. You will have to pray to Devi. That is what is the remedy also. कि ना माता की पूजा करना पड़ेगा, देवियों की पूजा करनी पड़ेगी. सो एनी टाइम यू सी वीनस डेबिलिटेटेड और ये सब, तो उनको प्रेयर दो. इट इज ऑल्सो सेड इंद्र प्रेड पर्टिकुलरली टू लक्ष्मी एक्चुअली in this case. So Lakshmi ji actually blessed him with thousand eye one. So anytime you feel see debilitated Venus, so you know whom to pray. So that's Lakshmi. So Lakshmi se Lakshmi. So that is also the dimension. This is sorry off track, but this just reminded me. I know कि medically there could be a reason, but मैं जब से ये fast कर रही हूँ मेरा skin improve हो रहा है. मतलब I know that you're fasting, so what body is detoxing, etc., etc. So that's the medical side of it. But is there also an astrological side? See, any skin issues that arises is because of Virgo. ठीक है, Virgo is the main element in it. ऐसा समझ लो. और as soon as we start praying to Lakshmi, that is Aquarius. So that is opposite to Virgo. So anytime, so that is where this remedy comes also. Like ना लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो जैसे कहते हैं ना वर्गो सही हो जाता है. वर्गो सही हो जाता है इन द सेंस कि आपका लोन, आपके कर्जे, यही सब तो प्रॉब्लम्स हैं. तो आप जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो यू गेट धन दान एंड यू गेट रिड ऑफ द लोन्स एंड ऑल. लेकिन वर्गो में और भी जितनी चीजें हैं वो भी लक्ष्मी पूजा से चीजें ठीक होती हैं. ठीक है, तो इसीलिए बॉडी में अगर तुम्हें कोई भी एलिमेंट है जो कि वर्गो की वजह से आ रही है, तो दैट प्रेइंग विद लक्ष्मी जी विल ऑलवेज क्योर इट. Not that there was an ailment, but मतलब वैसे मेरे को फील हुआ कि there's a different kind of होता है भी होता है. Also मेरे हाथ की लाइंस बहुत frequently change हो रही है. ये तो इतना तेजी से तो नहीं होगा, मतलब ये कोई और रीजन हो सकता है. मुझे समझ नहीं आया क्या रीजन है, बट बहुत मतलब there's multiple things जो मैंने पिछले I think फास्ट स्टार्ट करने से पहले और अभी में मैंने जो चेंजेस देखे हैं, और हर रोज कुछ ना कुछ मुझे दिख ही रहा होता है उसमें नया. मे बी आई एम ऑल्सो डिस्कवरिंग इट, लेकिन मतलब काफी फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ है. तो मुझे वो समझ नहीं आया. नॉट दैट आई एम सीइंग एनी इम्पैक्ट इन लाइफ, लेकिन मतलब वो फ्लक्चुएशन मेरे को दिख रही है हाथों में. लाइंस कट रही हैं, चेंज हो रही हैं, नई बन रही हैं. समझ नहीं आया कुछ. इतना फ्लक्चुएशन मैंने कभी नहीं नोटिस. अभी बचपन से आज तक सेम ही है, पता नहीं तू कैसे नोटिस कर रही है. अरे मैं आप यार मैं फोटो भेज दूंगी, मैं सही बता रही हूँ. दैट सेंट्रल नहीं ठीक है, मतलब आई एम अप्रिशिएटिंग तेरा ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो दैट इज वेयर दिस theme of Sahastra Yoni comes in. ठीक है, so basically Indra is having issues with Bharni. You can also understand like this कि इंद्र का जो नक्षत्र है that is 8 number and उसके रोग के स्थान पे is going is Bharni, and that is where you understand कि he is opposite to Bharni. What was Bharni? Yoni. Don't worry, I will not ask. Bharni is something that was to constrain, to restrict, to restrain.
ठीक है, अपने ऊपर संयम नियम रखने का काम था भरनी का। एंड इंद्र इज टोटली अपोजिट टू द होल एस्पेक्ट ऑफ इट। ना कोई नियम, न कोई संयम, न कोई लिमिट। दैट इज व्हाट इंद्र इज। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इंद्रिय ऑल्सो इज। ना कोई संयम, ना कोई लिमिट, ना कोई इसका वो। ठीक है, जितना भी टच का कह लो, जीभ का कह लो, नेत्र का कह लो, सबका कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड, कोई रिस्ट्रेन नहीं है, अनरिस्ट्रेन्ड। सो दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड कि इंद्र और इंद्रियों में बहुत क्लोजर रिलेशन है। दैट इज वाई वी ऑलवेज सेज कि इंद्रियों पे नियंत्रण रखो, इंद्रियों पे नियंत्रण रखो। ठीक है, दैट इज वेयर वी से। सो इसीलिए ज्येष्ठा का कोई लेना देना नहीं है किससे, कोई भी कंट्रोल से, कोई भी रिस्ट्रेंट से। दैट इज ऑल्सो, एंड दैट इज द रीजन वाई दिस पर्सन इज गेटिंग इश्यूज। इश्यूज इसी की वजह से आ रहे हैं। एंड दैट इज वाई ही इज प्रेइंग टू देवी। देवी माता की पूजा करो, दैट इज वेयर भरनी इज, राइट? भरनी इज द नक्षत्र ऑफ देवी। So that is where he is praying to Devi to get rid of all the ailments that he is having. ठीक है?